Hi guys, this is full body workout with only one pair of dumbbells. So let's start. First exercise is for chest. हम लगाएंगे dumbbell grip push-ups. I can't believe the night lay waste to all we'd given. But honestly, you've got इसके आपने लगाए हैं 15 to 23 sets. Next exercise is for back. Dumbbell bent over, bent and up. आपने अपनी लेग्स के साथ साथ डंबल लेके जाने हैं, ऊपर जाके ब्रीथ आउट. सेम इसमें भी आपने 15-15 के 3 सेट्स लगाने हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर शोल्डर्स. हम लगाएंगे शोल्डर प्रेस स्टैंडिंग. ये आप सीटेड भी लगा सकते हैं. 95 डिग्री नीचे, ऊपर पूरा स्ट्रेट, ऊपर जाके ब्रीथ आउट. I can't believe myself. I never thought that this would be our end, but it's nothing new. And my lover's honesty, I could push it back down if I have to. Same 15 to 20 reps, 3 sets. Next is triceps. Same position, bent and kick back, dumbbell kick back. इसमें आपकी एल्बो स्टेबल रहेगी. पीछे जाके आपने ब्रीथ आउट करना है. कोशिश करना है थोड़ा सा पीछे होल्ड हो. So tell me now, what's left to lose if we run? Next exercise is for biceps curls. Same 15-15, 3 sets. Slowly ऊपर, slowly down. ऊपर जाते हुए breathe out. आपकी अपनी बॉडी के साथ एल्बोस टच नहीं होनी चाहिए. इसके भी आपने 15 के 3 सेट्स लगाने हैं. Next exercise is legs. Dumbbell weighted squats. ये आपने शोल्डर के ऊपर यहाँ पे रखना है and do squats. 1.
रेंज सेम रहेगी इसमें। नाउ 2 मिनट्स रेस्ट। सो हमारी हर मसल की सिंगल एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम एक एक्सरसाइज हर मसल की और लगाएंगे। होम वर्कआउट के लिए आपको 2 एक्सरसाइज सफिशिएंट होएगी, जिसके हमने 3 सेट लगाने हैं। हमारी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। ऊपर जाकर ब्रीथ आउट, स्लोली लगानी है बिल्कुल। सेम 15 reps 3 सेट्स एंड स्लो लगाना है। ध्यान में रखो आपके पास डंबल इतने सारे नहीं है कि आप वेट इंक्रीज कर सकते हो, इसलिए रेंज ऑफ मोशन अपनी स्लो रखो, कंट्रोल में लगाओ, ब्रीदिंग के साथ लगाओ। इतने वेट में हो जाएगा मसल पंप। बैक की सेकंड एक्सरसाइज हमारी डेडलिफ्ट, डंबल डेडलिफ्ट। सेम हमने हिप हिंज करना है एंड डंबल को नीचे लेके जाना है, चेस्ट को बाहर निकाल के रखना है हमने। अब बैंडिंग करनी है हमने बैक। हिंज और हिप, ऊपर जाके ब्रीथ आउट। But I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. इसमें आपने ऊपर जाके ये नहीं, चेस्ट को अप करना है, ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन पे नहीं जाना। चेस्ट अप, नॉट दिस, ओनली दिस। सो सेम हमने इसके भी 15 के 3 सेट्स लगाने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज है ये डंबल लेटरल रेज। स्लोली ऊपर जाके हमने ब्रीथ आउट करना एंड आपकी एल्बो हमेशा डंबल से ऊपर रहनी चाहिए। जितना कम जंप इसमें है उतना ज़्यादा बेटर है। इसके भी आपने 15 reps 3 सेट्स विद कंट्रोल स्लोली एंड ऊपर जाके हमेशा ब्रीथ आउट। जहाँ भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे हमने ब्रीथ आउट करना है। ट्राइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन। I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. या आप बैठ के भी लगा सकते हो। ऊपर जाके ब्रीथ आउट स्लोली कंट्रोल में। Don't hesitate, hold me back, 'cause I won't be there. I'm on the back.
ट्राइसेप टर्न, इसके भी आपने 15-15 रेप्स 3 सेट्स। बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज डंबल हैमर कर्ल, स्लोली ऊपर स्लोली डाउन, ऊपर जाके ब्रीथ आउट एंड एल्बो स्टेबल। आइसोलेशन मूवमेंट जितना आप आराम से करोगे उतना बेटर होगा। If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. ऑलरेडी बॉडी पंप फील कर रही है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज एग्स, डंबल वेटेड लंजेस। But you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never. बैग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। Why we lose. And that's it. और वर्कआउट इज कंप्लीट एंड मैं बहुत पम्प्ड फील कर रहा हूँ बॉडी में। हालांकि मैंने सिर्फ एक सेट लगाए है, आपने 3 सेट्स लगाने हैं हर एक्सरसाइज के। और कोशिश करिए ये सब आप बिना रेस्ट के करें। अगर आपने रेस्ट लेनी भी है तो 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट ना ले, क्योंकि होम वर्कआउट है। वेट हमने कम लेने इसमें, घर पे आपके पास ज़्यादा डंबल्स भी नहीं हो गए इसलिए। सो दैट्स इट, फुल बॉडी वर्कआउट। 2 एक्सरसाइज हमने फुल बॉडी की लगाई है, हर मसल की। स्टे फिट।